So hi everyone. So moving on to the next session, which will be on host your first website using Azure Static Web Apps. And we have Mohammed Samiullah for conducting this session. He's a beta MLSA and he will be starting with the session now. Okay, it will be an introductory session, so you can all follow along with whatever you've learned about Azure and using your Azure accounts. So you can follow along in the session as well. So passing it to Samiullah. Yeah, your screen is visible now. Okay. Give me a minute. Yeah, sure. Okay, so am I audible? Yes, you're audible. Okay. Hello everyone. Welcome to the last session of today's event. So before starting the event, uh, let's do some interaction. Where are you guys joining from and which semester you are and which university you are from? You can write on chat box in chat. Okay, where are you joining from and in which semester you are? Okay. And from which country are you joining from? Okay, Pakistan, India. Okay, I think many of you joining from Pakistan and India. So okay, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन और लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, uh, okay. So our today's session is about host your first website using Azure Static Web App Service. Okay, then a little introduction about me. My name is Mohammed Sarniullah and I am a front-end developer beta MLSA at Microsoft, and I am also an open source developer at Microsoft. And here are some of my contribution in Microsoft. I have contributed 50 plus open source projects in total. Some of them are from Microsoft, GitHub Education, DevScript, and Static Web App documentation. Then I also identify and resolve 5 bugs in Azure Static Web App documentation and 1 bug each in the GitHub documentation, Microsoft Cognitive Service, and Microsoft Blend C# module. Then I also work in Social Impact League, that is in which I work with the Microsoft content team for the enhancement of the content associated with Azure Healthcare Service with the ultimate goal of increasing accessibility to beginners in the field. Or previously I was working like slide thodi unupdated. Previously I was working on Azure Media Services, or I also achieved these 2 batches, one of Community Hero and other of open source batch. So little introduction about me. So अब हम start करते हैं अपना event.
अच्छा आर्यन, आप मुझे चैट पढ़ के बता सकते हैं? अच्छा गाइस, आप लोग Yes. अपने भी इंट्रोडक्शन शेयर कर सकते हैं कि वेयर आर यू ज्वाइनिंग फ्रॉम और आपका क्या एक्सपीरियंस है, डू यू नो अबाउट वेब डेवलपमेंट। क्योंकि जो हमारे आज के इवेंट के प्रेरेक्विजिट्स हैं वो यही हैं कि यू हैव माइट सम नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट, HTML CSS JavaScript का थोड़ा थोड़ा पता हो, then you have Git installed on your system, and most importantly you must have a GitHub account जो कि मेन पार्ट है to host your website. Then you have a code editor Visual Studio Code, जिसके थ्रू भी हम होस्ट कर सकते हैं. सो विल सी आगे कि हम किस तरह से वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं ऑन Azure. सो दीज आर दी सम प्रेरेक्विजिट्स. तो जिनके पास नहीं है तो काइंडली साथ ही साथ फॉलो भी कर सकते हैं, और दे कैन इंस्टॉल. सिंपली राइट git ऑन ब्राउजर, यू विल फाइंड अ फर्स्ट लिंक, देन गिटहब पे साइन अप कर लें एंड VS Code. Aryan, can you share the link as well on chat? So जिसके पास नहीं हो इंस्टॉल कर लेगा. Yeah, yeah, sure. Okay. I will add it in the chat. ओके, सो जो आज की इवेंट का मोटिव है, जो आज हम सीखेंगे, वो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं कि चूज एन एग्जिस्टिंग वेब ऐप. कि आपका कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो कि HTML CSS पे भी हो सकती है, एंगुलर, रिएक्ट और व्यू. So you can host every type of website on Azure. Then after building a website, अच्छा आज हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से आप होस्ट कर सकते हैं. बट दीज आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड. तो फर्स्टली कि आपके पास एक वेबसाइट रेडी होनी चाहिए. देन आपने जो वेबसाइट बनाई है आपको लोकल सिस्टम पे रन करके देखना है. देन यू हैव टू पब्लिश द ऐप टू Azure स्टैटिक वेब ऐप. सो बेसिकली लोकली रन करने से आपको पता चल जाएगा कि ऑल द फंक्शंस आर वर्किंग वेल. लाइक प्रोडक्शन में जाने से पहले यू चेक everything is working fine. So these are the today's learning objectives. Then move on to the agenda. So we'll start from the introduction कि क्या है Azure Static Web App Service, किस तरह से कर सकते हैं. Then we'll plan कि अच्छा what are the steps, and there is also an exercise जिसमें आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड की जाएगी और उसको यूज करते हुए आपको होस्ट करनी होगी अपनी वेबसाइट. So yes, these are the agenda for today, and lastly summary. Okay, so introduction. अच्छा, तो बेसिकली मोस्टली लोग यहाँ पे जितने भी हैं आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर से अबव ही हैं, और यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, राइट. तो बेसिकली जो हमारे पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. HTML जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, देन CSS जो कि स्टाइलिंग ऐड करता है, देन JS फंक्शनलिटी ऐड करता है. You make a website like we all make a website in our first semester IICT course. तो उसमें हमें वेबसाइट बनाने को दी जाती है, एंड देन जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें कहा जाता है कि यू हैव टू होस्ट दिस वेबसाइट पब्लिकली सो दैट एवरीबडी कैन सी. एट दैट पॉइंट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड. अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर कोई सीख रहा है वेब डेवलपमेंट, सो थिंक कम इन माइंड कि अच्छा मैंने वेबसाइट बना रही है, ये मुझे तो विजिबल है, लेकिन मैं इसको शोकेस कैसे करूँ, दूसरों को कैसे दिखाऊं. तो यस, तो दीज आर दी थिंग्स जो हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से कर सकते हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड, तो यस, तो हमारे पास सिनेरियो है कि हमारे पास वेबसाइट है और वी वांट टू शो टू आवर पीयर्स और टीचर्स टू showcase our work. देन Azure स्टैटिक वेब ऐप सर्विस है क्या चीज़. तो पहली चीज़ सिंपल सी, हमारे पास एक सर्विस है जो कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है. Azure Static Web App solves the hard problems all the way from your source code to globally availability. So here you can see कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें, कि यहाँ पे कोड चेंजेस है, जो आपका कोड है, जो आप कोड करते हो आप Azure DevOps पे रखते हो या फिर GitHub पे रखते हो, सही है. तो दीज आर दी बेसिक स्टेप्स कि आपने कोड के बाद सेकंड स्टेप पे आपको GitHub रिक्वायर्ड है या DevOps रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अपने सोर्स कोड को रखोगे. देन देयर इज अ मैजिक बिटवीन, जिसके थ्रू आप Azure स्टैटिक वेब ऐप पे अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो, जो कि GitHub या DevOps के थ्रू हो रही होती है. और देयर आर 3 वेज
जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. So here you can see के the source code you have developed a website, you add on GitHub, then you using the source code you add the service on Azure Static Web App. So this is the basic structure जो follow हो रहा होता है जो हम working कर रहे होते हैं. So yes, this is it. Then कुछ features हैं Azure Static Web App के, जो कि ये कि globally distributed web hosting है. Static content, अच्छा, these are the things के ये आप यूजर से क्लोज होती है कि ये आपका सोर्स कोड को बेसिकली जो स्टैटिक वेब ऐप सर्विस है इट इज फॉर दी स्टैटिक कंटेंट लाइक आपका टेक्स्ट हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बट you can also integrate an API by using Azure functions. So there is also a feature on Azure Static Web App कि आप इसमें अपनी API के थ्रू डायनेमिक वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं. Then Azure Static Web App Services has the facility तो डायरेक्टली आपके जो GitHub है या DevOps इंटीग्रेशन है उसको यूज करते हुए बिल्ड करता है और डिप्लॉय करता है वेबसाइट को. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्री SSL सर्टिफिकेट है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है. ये नहीं कि वहाँ से कंटेंट चोरी हो रहा है या वहाँ पे somebody is trying to attack on your website. Yes, and then unique preview URLs. You get unique URLs when you host the website on Azure Static Web App. अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक hosting और domain is a separate thing. जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो तो आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, you get a URL which is a random URL जो आपके हिसाब से नहीं होता, which is provided by the service provider. So you get a URL, then you have to purchase a domain separately. तो देन दिस इज अ सेपरेट प्रोसेस, बट वी आर सीइंग कि होस्ट कैसे करते हैं. बट आप वो भी कर सकते हो कि डोमेन परचेज करके देयर इज अ थिंग कि आप उसको कनेक्ट कर सकते हो डोमेन के साथ अपनी होस्टिंग सर्विस को. सो यू कैन आल्सो डू दैट थिंग. ओके, सो नाउ व्हाट विल यू डू कि आफ्टर यू चूज योर एप्लीकेशन you will build and run your front-end application, then automatically build and deploy your web app to Azure from a GitHub repository with GitHub Actions. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी कि ये वेब GitHub Actions क्या हैं और build and deploy किस तरह से होगा. तो we'll see in next steps, or then you will explore launch your application as follow. Okay, so next step, you might be thinking you need to create a resource first, but Azure is a simple thing. Let me share wait. Okay, those who don't have Azure subscription, I am sharing with you. I share in the chat. जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, he or she can easily get from here. ओके, सो यस, जब तक हम फर्दर देखेंगे कि क्या किस तरह से हमें करना है, तो जिनके पास नहीं है तो दे कैन गेट द सब्सक्रिप्शन. आई शेयर द लिंक. स्टूडेंट Azure for student is free and you can also get GitHub student developer pack. तो फर्स्टली हमें अपनी जो वेबसाइट है उसे बनाना है और देन विल सी कि किस तरह से चीज़ों को करना है. So there is an exercise for you all to get started with. ठीक है, अब यहाँ पे आई फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास रियान टेल मी के लिमिटेड टाइम है, तो आई हैव प्रोवाइडेड अ टेम्पलेट जिसमें आपको रेपोजिटरी और रन ऐप एंड देन नेक्स्ट विल सी कि दीज आर दी थिंग्स आप अपनी रेपोजिटरी पे भी कर सकते हैं. लेट मी शो यू कि लेट मी शो यू लिंक, गिव यू लिंक.
Okay, so I created a repository for today's session. तो आप इस पे जा सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ एंड हियर यू कैन सी कि ये एक वेबसाइट है जिस पे सारे मेंबर्स के नाम है, आप लोग भी ऐड करें एंड यू कैन सी कि अच्छा अब क्या फ़ायदा है गिटहब पे होस्ट करने का कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी कोड में एडिटिंग करेंगे, ये एट अ सेम टाइम यहाँ पे अपडेट कर देगा वेबसाइट पे। तो लेट मी शेयर अ लिंक विद यू गाइस। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे स्टेप्स भी रिटर्न है बट आपको यहाँ पे जाने हैं attendees.json में। अच्छा, फर्स्टली आपको इसकी कॉपी क्रिएट करनी होगी बाय क्लिकिंग ऑन फॉर्क। आफ्टर फॉर्किंग इट you have to go on attendees.json. Then you have to add a name in this format like this, full name and then comma. So you can guys do it right now, and those who actively take part in these activities will get the LinkedIn Premium vouchers. There is also an exercise in the last. So here I want to show you as your static web app in action. So here you can see I added these names, और जैसे ही मैं यहाँ पे edit करूँगा, it will automatically update the code, and you don't have to go on Azure and deploy it again. It will automatically detect changes and push it to the website. So guys, start doing. Aryan, are you doing this thing? I added your name, but you can also do. Yeah, sure. I'll also have a look. Okay. So basically I want to give a concept कि किस तरह से कितने fast Azure static web app जो भी आप changes करते हैं और automatically push कर देते हैं website पे। Okay, Khalid, let me check. ओके गाइस, आपको करने के बाद ना पुल रिक्वेस्ट भी बनानी है ताकि मैं ओरिजिनल रेपो में करके वेबसाइट पे आपको दिखा सकूं। तो जिन्होंने कर लिया वो जल्दी से पीआर भी क्रिएट कर दें। सॉरी खलील। अच्छा, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो आस्क। ओके ओके, जस्ट सी, लेट मी चेक। ओके खलील, you have to add a comma after Mohammed Samiullah.
So kindly fix it. Okay, let me do one thing कि मैं इसको पीआर को मर्ज करके आप लोगों को शो करूँ एक। लेट मी मर्ज इट। इट विल गिव एन एरर क्योंकि जेसन डॉट फाइल में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो विल फिक्स इट। तो हियर यू कैन सी के पीआर मर्ज हो गई। देन व्हाट विल बी नेक्स्ट? सो सिमिलरली आप जब अपनी वेबसाइट ऐड ऑन करोगे, सो यू विल डू सिमिलरली, विल सी दी स्टेप्स के किस तरह से करने हैं, बट आई वांट गिविंग यू an example के what will happen when you do changes in code. So okay, let me, अच्छा वेट करते हैं ताकि यहाँ पे एरर शो, देन विल फिक्स इट। अच्छा, यू कैन ऑल्सो रिव्यू कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं बाय गोइंग ऑन दिस एक्शन टैब। here you can see कि एक पीआर क्रिएट हुई थी और here you can see एक एरर आगे मर्ज हो गई, बट जो अपडेट हुआ था वो हमारी वेबसाइट पे नहीं आया है। तो ये अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये एरर आ गया। तो लेट मी फिक्स इट। बट यहाँ पे एक और चीज़ देखें, वेबसाइट डाउन नहीं हुई, थिंग्स आर गॉन क्योंकि जेसन फाइल में इशू है, जिस वजह से वो सारे डाटा यहाँ पे व्यूएबल नहीं है। सो इसको फिक्स करते हैं। सही है, तो मैं डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ मेन ब्रांच में। सो अब ये दोबारा से चेक करेगा जो चेंजेस किए मैंने, तो हम एक्शन पे चलते हैं, एक्शन टैब पे। एंड हियर ही इज चेकिंग के जो हमने अपडेट किए जेसन के वो चेंजेस करेक्ट हैं या नहीं। इट विल टेक सम सेकंड्स जिसमें ये पता चल जाएगा हमें। और जो बाकी लोग अभी कर रहे हैं चेंजेस, सो काइंडली पैच एंड मर्ज कर लें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा फॉर पैच एंड मर्ज करने के लिए, देन यू कैन क्रिएट अ पेयर। सो इट्स प्रोग्रेस। ओके, सो हियर यू कैन सी कि जो चेंजेस की थी वो पुश हो गई हैं हमारे एजियो स्टैटिक वेबसाइट पे। तो अब हम यहाँ पे चेंजेस व्यू कर लेते हैं पेज रिफ्रेश करके। ओके, सो हियर यू कैन सी कि इस तरह से इट टेक्स अराउंड अ मिनट, वो डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड। तो हियर यू कैन सी के नेम ऐड हो चुका है। सिमिलरली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और जो टॉप 3 लोग होंगे विल गेट सम इंसेंटिव्स एट द एंड। ठीक है, तो हम अब सेशन में आगे चलते हैं। आई होप कि क्लियर होगा वो चेंजेस किस तरह से की और किस तरह से उसने डिटेक्ट की चेंजेस। और इट शोज कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर नहीं थी प्रॉपर फॉर्मेट में, तो इट इसने क्लोज कर दी वो चीज़। बट जब मैंने उस चीज़ को सेट किया तो इट पुशेस ऑन दी वेबसाइट। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
अच्छा, जब आप इस रेपोजिटरी की लिंक पे आएंगे, इस रेपोजिटरी पे आने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्क करना है। फॉर्क करेंगे तो वेब इस रेपोजिटरी की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। देन you have to go on attendees.json. Then you have to write your full name like this. और जो आपके पास प्रीवियस नेम है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमा है, यहाँ पे आप कॉमा ऐड करके अपना फुल नेम पेस्ट कर दें। तो इट विल हैपेंस कि आप जैसे ही ऐड करेंगे इट विल शो ऑन दी वेबसाइट। ओके, सो हारून ने कराइए, करिए। ओके, लेट्स सी। यस, अब यहाँ पे इट्स करेक्ट। एंड ये मर्ज हो चुकी है। अब इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड, और ये फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा नेम। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। सो आई गेस सबको क्लियर होगा कि किस तरह से चेंजेस को डिटेक्ट करता है एज़्योर, और देन इट पुशेस ऑन द वेबसाइट। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इफ यू आर डूइंग विद योर वेबसाइट यू हैव टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑन गिटहब और डेवऑप्स। बिफोर pushing on GitHub or DevOps, you have to run on your local system. Okay, it is working fine. Then after that, you will push your source code on the GitHub. Then we'll see next के अब क्या करना है। Okay, so the main part कि अब हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, अब हम उसे we are doing from this scratch now कि अब हम किस तरह से इसको डिप्लॉय करेंगे Azure पे। So yes, so your ultimate goal is to host your app in Azure. सो हियर यू कैन सी कि एक स्ट्रक्चर मौजूद है कि ये आपकी एप्लीकेशन है which you added on a GitHub. Then GitHub action को यूज करते हुए इट विल वर्क, और जैसे ही चेंजेस होंगे रिप्लाई करता जाएगा। और GitHub actions, GitHub बेसिकली सोर्स कोड प्रोवाइड करे टू Azure टू होस्ट दी वेबसाइट। तो इन दिस फॉर्मेट हमारी वेबसाइट चल रही होती है on Azure टू होस्ट ऑन Azure। देन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, हमारी वेबसाइट भी रेडी है, गिटहब पे भी हमने डाल दी है। नाउ वी वांट टू कनेक्ट आवर स्टैटिक वेब ऐप, वी वांट टू होस्ट। सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है हमें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐप लोकेशन बतानी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ऐप लोकेशन सिर्फ स्लैश है क्योंकि इट्स अ सिंपल HTML CSS वेबसाइट। सो आप यहाँ पे सिर्फ स्लैश डालेंगे। इफ़ यू आर डूइंग विद अ फ्रेमवर्क तो यहाँ पे SRC फोल्डर आएगा। Let me show you on the website as well क्या किस तरह से Azure portal लिखते हैं, how you can do these things. Okay, जब आप लोग लॉग इन करेंगे अपनी वेबसाइट पे and by getting the free Azure free subscription for the students you will see Azure portal like this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्विस यूज की हुई है, तो इट्स शोइंग हियर। बट जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट अ रिसोर्स। देन क्रिएट अ रिसोर्स के बाद आपको कौन सी सर्विस चाहिए, यू विल सिंपली गो and write static web app. So here you can see कि आपके पास ये सर्विस आ जाएगी। Then after clicking on it, अब आपका प्लान है यहाँ पे static web app you will create. Okay, so
आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करनी है सर्विस, देन यहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करनी है, आपकी स्टैटिक वेब ऐप का नाम क्या है, एंड व्हाट इज योर प्लान टाइप, तो यहाँ पे फॉर हॉबी, फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट एंड फॉर जनरल पर्पस एज वेल। फिर यहाँ पे एज्योर फंक्शन एंड स्टैकिंग डिटेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देन वी हैव डिप्लॉयमेंट डिटेल एज वेल। अच्छा, अब यहाँ पे ना दीज आर दी सर्वर्स, जो कि आपके रीजन का सर्वर होगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे फॉर दी फास्टेस्ट सर्विस। तो हमारा जो रीजन है वो ईस्ट एशिया में, तो विल सेलेक्ट दिस। देन एज आई टोल्ड यू कि गिटहब के थ्रू हमारी मेन जो रेपोजिटरी होती है या जहाँ पे हमारा सोर्स कोड होता है, यू कैन क्लिक ऑन दिस एज वेल, क्लिक ऑन गिटहब। देन यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स पूछेगा कि व्हाट इज योर गिटहब क्रेडेंशियल्स, देन आपकी प्रोफाइल, देन यू कैन सेलेक्ट दी रेपोजिटरी। सो लेट्स सेलेक्ट दिस, देन इसमें अच्छा मास्टर ब्रांच है तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। अब ये बिल्ड डिटेल्स पूछेगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ पे बनी हुई है, तो हियर आर दी फ्रेमवर्क्स, Vue, JS, HTML and static site generator as well. Or if you are building through HTML, CSS, JavaScript, so it would be better to select custom, but you can also select HTML as well. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे HTML सेलेक्ट करें, सो हियर आई टोल्ड यू कि आप HTML में आपकी मेन फाइल होती है index.html, तो कोई फोल्डर नहीं है, तो सिंपली आप स्लैश डाल लें। एंड आपकी कोई API लोकेशन नहीं है, बट इफ यू website is dynamic, you have to add API function as well. And then output location, then you can simply click on review plus create. So this is the simple method कि आप Azure portal पे जाके simply इस तरह से कर सकते हैं। But there are two more methods, जो कि एक Visual Studio Code के थ्रू है और दूसरा directly from the Azure CLI में। तो आप इन तीनों तरीकों से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, बट दी मोस्ट सिंपलेस्ट एंड easiest one is to go on Azure portal and deploy using portal. So yes, this is it. Let's move forward. ओके, तो हम इस पे थे कि हमारी स्टैटिक वेब ऐप इंस्टेंस को गिटहब से हम कैसे कनेक्ट कर रहे होंगे। देन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब सबसे जो कॉमन सवाल है, जो हमें पब्लिश करने के लिए जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है, वो है कि हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए गिटहब रेपॉजिटरी में। फ्रॉम दिस, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि just by selecting the options on Azure portal, you can simply host your website. Okay. ओके, सो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा राबिया, यू आर सेइंग कि कुछ करते हो, क्या एरर आ रहा है, आप कैन एलोबरेट इट प्लीज, और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। अच्छा, बेसिकली आपको परचेज करनी पड़ती हैं सर्विसेज, बट एज्योर इज फ्री फॉर स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ से एज्योर को फ्री ले सकती हैं, जिससे आपको 100 क्रेडिट मिल जाएंगे पर मंथ।
तो इट्स पहले आपको Azure for Students free subscription चाहिए होगी, then you can easily host your website. Rabia, do you make the PR? Uh, I guess $2 to $3. Aryan, are you sure about it कि कितने हमें credits use होते हैं? I don't think so. It requires any credits. Like you need to have the credits, but they are not basically they're not used when you deploy a static web app, as far as I think. मुझे भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है, but we'll let you know. ठीक है, so I guess सबको clear हैं सारी चीज़ें. So we have an exercise for you guys. अच्छा, create an Azure static web app. सही है, तो you have to create a web app. So इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो मेथड लिखा है इट्स फ्रॉम VS Code extension. So I will share one more link with you guys जहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा. उस टेम्पलेट को आप उस टेम्पलेट को आप यूज एज अ टेम्पलेट करके which will make which will be used as your repository, which will become your repository. Then आपको क्या करना है, अच्छा ये आप अपनी वेब उससे भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी, बट विल ऑल्सो प्रोवाइड. और जो टॉप 3 वहाँ पे हैं जिन्होंने नेम्स ऐड किए हैं, और जो टॉप 3 यहाँ पे होंगे यूजिंग टेम्पलेट बना के और एज्योर स्टैटिक वेब ऐप सर्विस पे होस्ट करेंगे एंड पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे. सो दे विल गेट सम लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स एंड Amazon गिफ्ट कार्ड एज वेल. सो लेट मी शो यू एन एक्सरसाइज फॉर यू ऑल, जो कि आप बाद में ट्राई कर सकते हैं सेशन के बाद. मेनली जो चीज़ें थी विच आई डिस्कस अबाउट एज्योर स्टैटिक वेब ऐप, दैट्स मैंने सारी कर दी हैं, और अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है. Yeah, there's a question that has been posted in the chat. Okay. So how GitHub pages different from deploying website through Azure? अच्छा, GitHub also provide a service to host your website. So there are two different services. GitHub से भी आप कर सकते हैं, Azure से भी कर सकते हैं. It's up to you. Like GitHub pages also act similarly as Azure static web app. तो उसमें आपको GitHub pages से कनेक्ट करना होता है, एंड Azure में आपको पहले GitHub पे पोस्ट करना होता है, then you can do. You Asif, you can get I shared the link, वहाँ से आपको मिल सकती है Azure for Students for free subscription, which is more efficient GitHub or Azure. Okay, so I think Azure is more secure and easy to host, like simple है, like आप पोर्टल पे जाके simply host कर सकते हैं. तो according to me, Azure is more efficient.
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल लाइक हम अगर कोई होस्टिंग सर्विसेज लें तो अक्सर वो कुछ अरसे बाद लाइक डाउन हो जाती है। अगर लाइक हम कोई इजी वे ट्राई करें तो एज्योर हमें ये लाइक फैसिलिटीज देता है कि लाइक कितने टाइम तक वो हम उस वेबसाइट को लाइक यूज कर सकते हैं। Okay, once you get Azure for student free, you can utilize for I guess 1 year. Am I correct, Aryan? Azure for student is okay, okay, okay. So Azure for student, you will get Azure for student on your student ID. So जब तक आप student हैं, like जब तक आप graduate नहीं हो जाते, and your student ID is active, so जब तक आपके पास ये सर्विस रहती है। हाँ, और अगर मैं MLSE के क्रेडिट्स यूज करूँ एज मैं अल्फा MLSE हूँ तो वो भी जब लाइक खत्म होगा मेरा पीरियड तो वेबसाइट लाइक बंद हो जाएगी। जी, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परचेज करने पड़ेगा इन क्रेडिट्स। और गिटहब पेजेस के साथ भी ऐसा ही लाइक है, वो भी फिर डाउन हो जाती है। गिटहब पेजेस फ्री है कि आपने एक बार कर दी उस पर चेंजेस, सो उसमें ये वाली चीज़ नहीं है। बट इन टर्म ऑफ सर्विस और एफिशिएंसी एज्योर इज बेटर, बट गिटहब पेजेस पे भी आप कर सकते हैं। गिटहब पेजेस पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू। मेरा एक क्लास क्वेश्चन है, जैसे हम एज्योर में अगर लाइक चेंजेस करते हैं और उसे कमेंट कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली राइट लाइक रन टाइम पे हमें वो चेंजिंग शो हो जाती है एज्योर के थ्रू अगर हम करें। तो क्या गिटहब पेजेस के थ्रू भी लाइक रन टाइम चेंजेस पॉसिबल है? यस, उस पर भी आप व्यू कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने गिटहब एक्शंस पे दिखाया था, तो सिमिलरली गिटहब पेजेस पे भी चेंजेस आपके पास शो हो जाती हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने चेंजेस की, तो वो भी सेम चीज़ पे काम कर रहा है क्योंकि गिटहब प्लेटफॉर्म है और गिटहब पेजेस गिटहब ही की सर्विस है, तो वी उसमें भी आपको इस तरह से सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। हाँ सर, लाइक जब हम एज्योर के थ्रू करते हैं तो हमारे पास एक डोमेन नहीं आती। लाइक मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो URL है उसमें हिब्सा कवल और इस तरह के लाइक कस्टम डोमेन, तो वो हम किस के थ्रू करते हैं? आई थिंक लाइक DNS कॉन्फ़िगरेशन समथिंग लाइक दिस। जी, वो बेसिकली आपको फिर उसके लिए डोमेन परचेज करनी पड़ती है। तो गिटहब डेवलपर स्टूडेंट पैक में यू कैन गेट अ फ्री डोमेन फ्रॉम दिस। उसमें भी सिमिलर तरीका है कि आपको अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉग इन करना है और यू विल हैव अराउंड 150 प्लस बेनिफिट्स, और जितनी भी पेड सर्विसेज हैं यू विल गेट फ्री एज अ स्टूडेंट। यस, मैंने लेट अवेल किया, यूज नहीं किया। थैंक यू सर। यस, अगर आप मैं कॉन्फ़िगरेशन का बता दें तो अच्छा होगा। कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की? लाइक कस्टम डोमेन के लिए अगर जो हम DNS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, सो उसमें उसमें आपको बेसिकली पहले तो एज़्योर सर्विस चाहिए। अब जो जहाँ से आप डोमेन परचेज कर रही हैं वो डोमेन से आप ऐड ऑन करेंगी, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आई विल शेयर दिस थिंग क्योंकि अगर हम अभी वो डिस्कस करेंगे तो टाइम एक्सीड कर जाएगा। तो आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो यस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो गिटहब डेवलपर स्टूडेंट पैक है, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। देन लास्टली एक एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है बेसिकली। उसमें आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि आपको किस तरह से करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू यूज दिस टेम्पलेट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन और देन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। सिंपली आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। देन यहाँ पे गाइडलाइंस मौजूद हैं
आप इसको फॉलो करते हुए वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट 3 विनर्स होंगे, अच्छा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं और लिंक्डइन पोस्ट पे भी शेयर करें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में मौजूद है कि आपको किस तरह से चीज़ों को पोस्ट करना है। तो ये यहाँ पे आपको VS कोड के थ्रू बताया हुआ है, मैंने आपको Azure पोर्टल से बताया। एंड देयर इज ऑल्सो अ वे कि आप Azure CLI से भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि अच्छा आप एंगुलर या फ्रेमवर्क से आप कोई वेबसाइट कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर विद यू गाइस। तो आपको ये करके कल तक यू हैव टू शेयर ऑन दी ग्रुप जो आपने वेबसाइट होस्ट की है। लेट मी शेयर विद यू गाइस। और अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, यू माइट गेट प्रॉब्लम्स वाइल डिप्लॉइंग दी वेबसाइट ऑन Azure स्टैटिक वेब ऐप। तो आप इशू पे आके सिंपली इशू क्रिएट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट आर यू फेसिंग, और इफ़ यू थिंक इट्स अ बग तो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से आप चीज़ें हटा सकते हैं। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन तो आप सिंपली इशू पे आके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इट वुड बी गुड कि आप स्क्रीनशॉट ऐड ऑन करें ताकि इट वुड बी इजी फॉर मी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ किस तरह से करना है। सो आई शेयर्ड अ लिंक, तो ये आप लोग कल तक करें। और जो टॉप 3 लोग होंगे जो सबसे जल्दी करके सबमिट करेंगे, शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पोस्ट करेंगे, दे विल गेट एन लिंक्डइन प्रीमियम इंसेंटिव्स। हाँ, यूजिंग दिस टेम्पलेट आपको वेबसाइट होस्ट करनी है बेसिकली। इस टेम्पलेट को बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये एक रेज्यूमे है, इसमें आप अपने हिसाब से एडिट करके अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करके then you will push on as your static web app and share with Aryan or on a group or also on LinkedIn post. सही है। So this is it. सर एक मैम चैट में कुछ पूछ रही है, काइंडली आप उन्हें रिप्लाई दे दें। जी 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 मैं देख लेता हूँ। अच्छा, you don't have your student ID. I think student ID के अलावा तो पॉसिबल नहीं है। आर्यन, if do you know this thing कि हम student ID के अलावा Azure सब्सक्रिप्शन मिल सकती है? नहीं, वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लाइक यू विल हैव टू, मतलब बाय करना पड़ेगा वो तो। हाँ, आपको परचेज करना पड़ेगा। और तो you also get, I think so, you get free if you use a credit card. Like you can use it, but like it could be that they put some yes charges you like that. have to, हाँ yes you have to add a credit card details, वहाँ से आपके शायद $1-2 कट होते हैं। Yeah. yes you have to add your credit card details। अच्छा, सो हम समराइज कर लेते हैं आज के सेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए कि यू वांट टू क्रिएट अ शॉपिंग लिस्ट वेब ऐप दैट इज सिक्योर एंड ऑफर अ गुड परफॉर्मेंस फॉर अ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कस्टमर बेस। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स कि एक तो परफॉर्मेंस और स्केल करना आसान है कि योर वेब एसेट्स आर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि क्लाउड है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर डाउन हुआ तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। इट्स एज्योर ग्लोबली सर्वर्स हैं एज्योर के। सो इफ वन सर्वर्स बंद होता है तो इट शिफ्टेड ऑन अनदर सर्वर, आपकी वेबसाइट कभी बंद नहीं होगी। देन द मेन थिंग के CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो कि मैंने शो की कि कंटिन्यूसली वो चेंजेस को डिटेक्ट करते हुए इंटीग्रेट भी हो रही हैं चीज़ें, दोबारा डेवलप भी हो रही हैं, लाइक चेंजेस को डिटेक्ट करना। तो दैट्स द अनदर बेनिफिट। देन लास्टली कि इट इज सिक्योर्ड विद एन SSL सर्टिफिकेट कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है फ्रॉम द अटैक्स। तो यस, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ Azure। और आई विल शेयर द लिंक्स with you guys as well। These are some additional resources। आपको रेपॉजिटरी से भी मिल जाएगी, मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ।
Then lastly, you guys can connect me on Twitter, LinkedIn, or GitHub maybe. So that is all from my side. I guess we cover up all the concepts, जो कि major concepts थे. So yes, thank you. Thank you, Sami, for the beautiful session. Thank you. I think everyone enjoyed the session a lot. And thank you so much for joining and like solving a lot of people's doubt and providing guidance. Yes, अच्छा बाकी जिनकी क्वारीज आ रही है ना वो काइंडली मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड इशू भी क्रिएट कर सकते हैं जो उनकी क्वारीज हैं और अभी एक और किसी का क्वेश्चन इट नेसेसरी टू अपलोड ऑन गिटहब पेज आई मीन इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द इंसेंटिव आप दूसरी सर्विस पे बिल्कुल कर सकते हैं ऑन गिटहब पेजेस पे कर सकते हैं बट टू गेट द इंसेंटिव इट्स रिक्वायर्ड कि आप एज़्योर स्टैटिक वेब ऐप पे करें सो मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ वो जो लिंक है हाउ टू गेट फ्री एज़्योर या एंड एक बार अपनी वो भी कर दो लिंक्डइन प्रोफाइल भी सेंड कर दो यहाँ पे ओके मैं शेयर कर देता हूँ yes मैंने शेयर कर दिए तो यू कैन गाइस कैन आस्क एनी क्वेरीज लिंक्डइन पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं और यू गाइस कैन आल्सो ऐड द क्वेरी ऑन इशू सेक्शन जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है या कहीं पे एम्बिग्यूटी है तो यू कैन आस्क एज वेल एंड यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट एंड दैट क्वालिटी इन मेकिंग बेटर okay guys thank you so much for joining or we'll do more session as well very soon thank you. Yes, thank you everyone for joining. And finally, that concludes our Global Azure Bootcamp. And thanks to all the speakers and all the attendees who participated well. So we will announce the results of the quizzes and for the active participants by email or in the WhatsApp group. I will also provide you the certificates and the prizes within. I think within it will take around 45 days to get all of them. So keep tab on your email IDs. And thank you so much. So in case anyone has any questions or any doubts, you can ask it right now. Otherwise, we will conclude the meeting in another 2 minutes. आई थिंक हम कंक्लूड करते हैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और इफ किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो दे कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप सो थैंक यू सो Yeah, मच वंस अगेन एंड बाय अल्लाह हाफिज yeah, sure. Thank you. Bye. Bye, everyone.